Assalamu alaikum. Next topic for our uh, today's our next topic is excretion. Inside excretion, we discuss about the structure of the kidney. Then we discuss the structure of the basic unit of kidney, that is nephron. Excretion is the removal. Excretion is the removal of the waste materials. Excretion is the removal of the waste material from the body, from the living body. The waste material may be carbon dioxide, waste material may be urine, and waste material may be in solid form. कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट मटेरियल है, यूरिन solid form waste material, sweets. These are the waste material removed from the body. This process is called excretion. Sweets through skin. कार्बन डाइऑक्साइड हम किस तरह रिमूव करते हैं? विद हेल्प ऑफ द लंग्स. यूरिन हम रिमूव करते हैं विद हेल्प ऑफ द किडनीज, विद हेल्प ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यानी किडनीज के मदद से बनते हैं. और सॉलिड्स हम रिमूव करते हैं विद हेल्प ऑफ द क्लोएका. यहाँ पर हम पढ़ेंगे किडनी का स्ट्रक्चर. देयर किडनीज आर 2 in number, having bean-like shape. Kidney has bean-like shape. किडनी का शेप जो है ना वो bean-like shape है. 2 in number है. They are 2 in number. We will draw the structure of the kidney. Kidney number 1. It is second kidney. There are 2 in numbers. Here we will draw just one kidney to discuss in detail. You should learn how to draw the structure of the kidney. Kidney का जो basic outer part है, the outer part of the kidney is called renal cortex. It is the outer part. The outer part of the kidney is called renal cortex. It is the renal cortex. Barony part है, outer part of the kidney. And the inner part is called renal medulla. Renal cortex is the outer part of the kidney, while renal medulla is the inner part of the kidney. Renal medulla के अंदर मजीद parts है, there which are called renal pyramids. These are in pyramid shape. These are called pyramids. Pyramids may be from 5 to 7. मेडोला के अंदर मजीद त्रिकोण लाइक शेप है, pyramid लाइक शेप है, जिसका नाम है pyramids. Pyramid के अंदर, pyramids is composed of the small fiber like structures. Pyramids are composed of the fiber tubular structures. These tubular structures are called nephron. These tubular structures are called nephron. These are pyramids, and these tubular structure inside the pyramids are called nephron. किडनी का जो बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो है नेफ्रॉन. लाइक ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिक यूनिट था न्यूरॉन, जो सारा काम परफॉर्म कर रहा था. Here the nephron is the basic structural and functional unit of the kidney. Nephron स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी बनाता है. नेफ्रॉन सारा फंक्शन कौन करता है? नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के अंदर यूरिन बनता है. So nephron is the basic structural and functional unit of the kidney. One pyramid has billion nephrons, million nephrons. One pyramid has million nephrons. We'll discuss the structure of nephron in detail next topic.
So it is the basic outer coat cortex, inner part medulla. Inside medulla pyramids are there. pyramid के अंदर nephrons पाए जाते हैं. These are the tubular structures. Nephrons are the basic structure and structural units. Now here सारे pyramids मिलके they are open into one tube that is called renal pelvis. All the nephrons, all the pyramids are open into one pipe that is called renal pelvis. Renal pelvis is one tube collecting from the pyramids. Renal pelvis के बाद next हमारा part है. Next हमारा part है renal ureter. The next part is called ureter. Ureter के बाद next part हमारे पास है bladder, urinary bladder. It is very simple structure. Kidneys are 2 in number, 2 है total. एक किडनी ऊपर है, एक किडनी नीचे है. The outer part is called renal cortex, the inner part is called renal medulla. Pyramids are there. Inside the pyramids nephrons are present. Nephrons मौजूद है जो छोटे छोटे tubes like shape है. Nephrons फिर हम पढ़ेंगे डिटेल से. Nephron has another structure. Nephron के अंदर फिर मजीद छोटे छोटे tubules होते हैं, वो हम पढ़ेंगे डिटेल्स. Nephron is the basic structure and functional unit of the kidney. सारा function nephron करता है. फिर हम पढ़ेंगे किस तरह यूरिन बनता है, how it functions. सारे pyramids collect हो जाते हैं. They are collecting into one tube. This tube is said to be renal pelvis. Renal pelvis के बाद है फिर ureter, then urinary bladder, then urethra. Urethra के बाद फिर urine out. Inshallah there will be no problem in this structure. If there is any problem you can ask about the structure of kidney. Then we will discuss internal structure, basic structure of the nephron. Nephron फिर हम मजीद बढ़ेंगे. एक ही पिरामिड में मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं जो फंक्शन करते यूरिन बनाने में. यहाँ पे और चीजें भी अटैच है, आर्टरीज भी अटैच है यहाँ पे, और के वेन्स भी अटैच है. हर नेफ्रॉन के साथ हर पिरामिड के अंदर आर्टरीज भी मौजूद है और वेन्स भी मौजूद है. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.